हेलो डियर फ्रेंड्स संडे एकेडमी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत केमती अच्छे समस्ते भल अच्छा ना आज आम स्टार्ट करवा आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी जो ट्रेडिशनल जिके इंडियन पॉलिटी पार्ट 8 चलो तो स्टार्ट करिया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज अच्छी आ बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी अच्छी क्वेश्चन नंबर 1 है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी द स्पीकर ऑफ लोक सभा द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा आंसर तो आपनकर ए कौन द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी से जिन आपन एक्सप्लेनेशन लिखा जाए ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोक सभा चेयरमैन ऑफ राज्य सभा आंसर आपन सी स्पीकर ऑफ लोक सभा Question number 3. Who among the following is not a member of the National Development Council? The Prime Minister, the member of Niti Aayog, the Chief Minister of State, the President of India. Answer of D. President of India. Okay. Question number 4. Right to vote is a political right, civil right, economic right, or legal right. Answer of D. Legal right. Okay. Question number 5. The term Greater India denotes माने Greater India दा कौन माने मान्यता कौन एटा पचारुछि पॉलिटिकल यूनिटी कल्चरल यूनिटी रिलीजियस यूनिटी और सोशल यूनिटी आंसर आपनकर बी कल्चरल यूनिटी होछि आपन ग्रेटर इंडिया बोली कहउछन ओके क्वेश्चन नंबर 6 इन व्हिच year where the Indian state reorganized in on the linguistic basis 1947 1951 1956 1966 one answer and answer apanakara C 1956 okay states were reorganized on a linguistic basis in India in 1956 to maintain unity and integrity of the nation to avoid violence and conflicts among the people. Okay, question number 7. English is the official language of which one of the following Indian states? Okay, Nagaland, Tripura, Assam and Manipur. एक क्वेश्चन आसले पिला को टिके बहुत कंफ्यूजन हुए काइना सब जगह आपन नॉर्थ ईस्ट साइड रो कहार अच्छी आंसर आपनकर ए नागालैंड ओके कोन पे इन 1967 द नागालैंड असेंबली प्रोक्लेम्ड Indian English as the official English language of Nagaland ओके पिला माने एटा होची प्योर आंसर question number 8 which of the following authorities is or are competent to issue writs for the enforcement of the fundamental rights president supreme court and high courts parliament answer कोन पिला माने आंसर पिला माने C supreme court and high courts okay Supreme Court and High Court are competent to issue writs for the enforcement of fundamental rights. Okay. Question number 9. Which one of the following writs literally means what is your authority? Habeas corpus, certiorari, quo warranto, prohibition. कौन हो बिना आंसर आंसर आपन कर सी quo warranto. Okay. Key warranto means what is your authority. Okay, question number 10. In which case did the Supreme Court restore the primary of the fundamental rights over the directive principle of the state policy? Goloknath case, Kesavananda Bharti case, Meena Ramesh case, all of the above case. Answer apanagara A Goloknath case. Okay. In Goloknath case, the Supreme Court restored the primacy of the fundamental right over the directive principle of the state policy. Goloknath case was a 1967 Indian Supreme Court case in which court ruled the parliament could not curtail any of the fundamental rights. पिला माने ये होची हमारा संडे एकेडमी रो यूट्यूब चैनल आपण माने देखुछन संडे एकेडमी आ चलंतु एठी गोटे जो क्यूआर कोड अछि प्लीज एटा गोटे स्कैन कर देबे स्कैन कले आपण बेनिफिट कोन मिलिबो ना आपण माने जो सब कंटेंट देखिया चाहउछन सेठी अवेलेबल रहबा ता सहित ए जो पीपीटी हम पढौछु तार पीडीएफ दिया जिवो आपण मानको बेनिफिट कोन मिलिबो ना जते बेले आपणकर परीक्षा पाके आसीबो आपण पीडीएफ गुडा को आपण डाउनलोड कर रखितबे केवल ताको स्क्रॉल डाउन कर जिबे आंसर जानि जानि जिबे आ एक्सप्लेनेशन भी जानि जिबे आपण भाई बहुत बेनिफिट हम ता से गोटे अनाउंसमेंट अछि पिला माने से होची ओडिसा फाउंडेशन बैच विश्वास करबेनी ओडिसा रे प्रथम
थर एमती गोटे सिस्टम आरंभ कर सन एकाडेमी कौन ना जदि आप ओपीएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी एसएससी रेलवेज जेकोसी एग्जाम प्रिपरेशन कर तो जदि मनकर आप जड़े जस्ट एवं गोटे ग्राजुएट जस्ट पास आउट हेले विश्वास करेंगे आप सब एग्जाम लगे कथा ओपीएससी ओपीएससी आसूसी ओएमएस आसूसी से ओएसएससी सीजीएल आसूची स्पेशलिस्ट आसूची क्यू आसूची तेमने ओ ट्रिपल एसएससी आरआई आसीबो एआरआई आसीबो तापरे एसएफएस आसीबो सेमती एसएससी आपणकर सीजीएल सीएचएसएल तापर सीपीओ आसूची रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आसूची तेणु यही सब जाकर गोटे कॉमन चैप्टर अच्छी ना नहीं मैथमेटिक्स अच्छी रीजनिंग अच्छी आपणकर इंग्लिश अच्छी तापर जनरल स्टडीज अच्छी करंट अफेयर अच्छी तेणु यही सब जाकर है जदि आम गोटे मिश्रण करवा निश्चित आम गोटे बढ़िया बैच हम से ओडिशा फाउंडेशन बैच से आपको कौन मिलेगा ना 100% सिलेबस कवर रहा आपन को मॉक टेस्ट भी दिया पर्सनल डाउट ग्रुप भी रहा वीकली करंट अफेयर जनरल स्टडी बोका पीडीएफ भी दिया सर फैसिलिटी कौन आप लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अच्छी सहित वीकली टेस्ट भी अच्छी सहित पर्सनल मेंटरशिप भी अच्छी है स्टडी मटेरियल भी आपको अनलिमिटेड मिले आप प्रिंट करेंगे ना प्रिंट न कले आप खाली पीडीएफ धरी पढ़ी पाए है यहाँ हूँ गोटे ऑफलाइन बैच पे मैंने ये हूँ गोटे प्योर ऑफलाइन बैच और प्राइस एट द रेट ओनली 999 विश्वास करेंगे ओडिशा रे एमती कहीं भाभी ना फास्ट टाइम पे सन एकाडेमी भावी सहित आप कहे ना मत लाइब्रेरी फैसिलिटी भल दरकार लाइब्रेरी मत भल दरकार निश्चित भाव में 499 अच्छी आपणकर ये जो आड्रेसटा देखते 8N4185 आप भिजिट करेंगे आईआरसी विलेज नापल्ली भिजिट कर डिटेल देखिपारे कौन अच्छी सहित आप लाइब्रेरी भी जॉइन करेंगे जदि आप किसी ओडिशा फाउंडेशन में जॉइन कर निश्चित भाव में आप नंबर कांटेक्ट करेंगे आउ बहुत भल भल फैकल्टी भी अच्छा मैथमेटिक्स रीजनिंग आपणकर जीएस इंग्लीश ओडिया ओडिया भी अच्छी है तेणु बहुत भल फैकल्टी अच्छे तेणु निश्चित भाव या विषय थे भावतु भावतु जो भुवनेश्वर रोचान कि ना भुवनेश्वर बाहर आसिक भुवनेश्वर भी पढ़ुंट आपके बढ़िया गोटे फैसिलिटी अच्छी जस्ट 999 आपन को फाउंडेशन बैच मिलूँ ठीक अच्छे तेणु चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम स्टार्ट करिया नंबर कंडक्ट करेंगे question number 11 there is no provision in the constitution for the impeachment of the dash chief justice of India chief justice of high court governor or vice president answer apan C governor okay the constitution of India provides for the impeachment of the certain high ranking official including the president vice president judges of the supreme court and judges of the high courts. However, there is no provision for impeachment of the governor in the constitution. Okay. Question number 12. The discretionary powers of governor is limited in appointment of chief minister, dismissal of the ministry, resolution of the legislative assembly, assent to bills. Answer upon got D. Assent to bills. Okay. Question number 13 go jiba. The minimum age limit for the membership of the Vidhan Parishad is 21 years, 25, 30 or 35. Answer one of C 30 years. Okay. Question number 14 को जिबा Money bill originated in the state legislative assembly on the recommendation of the governor, the chief minister, the finance minister or the speaker. Answer आपन A governor. Okay. Money bill originated in the state legislative assembly on the recommendation of the governor. Question number 15. The power to decide an election petition for the state is vested in the Parliament, Supreme Court, High Courts, Election Commission. Answer C. High Courts. Okay, the power to decide an election petition for the state is vested in the High Courts. Okay. Question number 16. The voting age in India was lowered from 21 years to 18 years through presidential ordinance, constitutional amendment, executive order, parliamentary legislation. Answer apan B. Constitutional amendment. Okay. Question number 17. Who is competent to dissolve the Rajya Sabha? The chairman, Rajya Sabha, president, joint session of the parliament, none of these. Answer apan no. D. None of these. Okay. Question number 18. The first open film star nominated to Rajya Sabha was Nargis Dutt, Sabana Azmi, Madhubala, Meena Kumari. Answer of A. Nargis Dutt. Okay.
Question number 19. What is the minimum age to qualify Lok Sabha election? 25 years, 30, 21 or 18? Answer आपन 25 years. Okay. In our last question, a bill is certified as money bill in Lok Sabha by the President, the Finance Minister, the Prime Minister or the Speaker. Answer आपन D, the Speaker. Okay. ପିଲାମାନେ ये होची हमर संडे एकेडमी रो यूट्यूब चैनल आपण माने देखुछन संडे एकेडमी आउ चलंतु एठी गोटे जो क्यूआर कोड अछि प्लीज एटा गोटे स्कैन कर देबे स्कैन करले आपण बेनिफिट कोन मिलिबो ना आपण माने जो सब कंटेंट देखिया चाहउछन सेठी अवेलेबल रहबो ता सहित ए जो पीपीटी हम पढौछु तार पीडीएफ दिया जिवो आपण मानको बेनिफिट कोन मिलिबो ना जते बेले आपणकर परीक्षा पाके आसीबो आपण पीडीएफ गुडा को आपण डाउनलोड कर रखिथिबे केवल ताको स्क्रॉल डाउन कर जिवे आंसर जानि जानि जिवे आ एक्सप्लेनेशन भी जानि जिवे आपण भाई बहुत बेनिफिट हम ता से गोटे अनाउंसमेंट अछि पिला माने से होची ओडिसा फाउंडेशन बैच विश्वास करिबानी ओडिसा रे प्रथम थर एमिति गोटे सिस्टम आरंभ करिया होची संडे एकेडमी कोन ना जदी आपण ओपीएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी एसएससी रेलवेज जे कोनोसी एग्जाम रे प्रिपरेशन करछन आपण तो जदी मन कर आपण जने जस्ट एबे गोटे ग्रेजुएट जस्ट पास आउट हेले विश्वास करते ना आपण सब एग्जाम पे लगिया कथा ओपीएससी रो ओपीएससी आसुची ओएमएस आसुची से बडे ओएसएससी रो सीजीएल आसुची तापण स्पेशलिस्ट आसुची स्कीव आसुची तमने ओ ट्रिपल एसएससी रो आरआई आसीबो एआरआई आसीबो तापरे एसएफएस आसीबो सेमदी एसएससी रो आपनकर सीजीएल सीएचएसएल तापरे सीपीओ आसुची रेलवे रो एनटीपीसी ग्रुप डी आसुची तेणु एई सब जाकर गोटे कॉमन चैप्टर अछि ना नहीं मैथमेटिक्स अछि रीजनिंग अछि आपनकर इंग्लिश अछि तापरे जनरल स्टडीज अछि करंट अफेयर अछि तेणु एई सब जाकर हला जदी हम गोटे मिश्रण करबा त निश्चित हम गोटे बढ़िया बैच हबो सेटा होछि ओडिसा फाउंडेशन बैच सेटा आपन कोन मिलबो ना 100% सिलेबस कवर रहबो आपन को मॉक टेस्ट भी दिया जिवो पर्सनल डाउट ग्रुप भी रहइबो वीकली करंट अफेयर जनरल स्टडी बुक पीडीएफ दिया जिवो ता सारा फैसिलिटी कोन आपन लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अछि ता से वीकली टेस्ट भी अछि ता से पर्सनल मेंटरशिप भी अछि हला स्टडी मटेरियल भी आपन को अनलिमिटेड मिलिबो आपन प्रिंट करिवे नले प्रिंट न कले मध्ये आपन खाली पीडीएफ धरि पढि पाए हला एटा होची गोटे ऑफलाइन बैच पिला माने ये होची गोटे प्योर ऑफलाइन बैच और प्राइस एट द रेट ओनली 999 विश्वास करिबानी ओडिसा रे एमिति केही भाबी नांती फर्स्ट टाइम पे संडे एकेडमी भाबिची ता सहित आपण जदी कहबे नाही मते लाइब्रेरी फैसिलिटी भल दरकार लाइब्रेरी मते टिके भल दरकार निश्चित नाम 499 रे अछि आ आपनकर ए जो एड्रेस देखछंती @N4185 आपण हेटे विजिट कर परिबे आईआरसी विलेज नापल्ली विजिट कर जे आपण डिटेल देखि परिबे संसा कोन अछि ता सहित आपण लाइब्रेरी भी जॉइन कर परिबे जदि आपण किछि ए ओडिसा फाउंडेशन में जॉइन करिया छै निश्चित नाम रे आपण ए नंबर कांटेक्ट कर परिबे आ बहुत भलो भलो फैकल्टी भी अछन मैथमेटिक्स रो आपण रीजनिंग रो आपनकर जीएस रो इंग्लिश रो ओडिया भी अछि हला तेणु बहुत भल फैकल्टी अच्छे तेणु निश्चित भाव या विषय थे भावतु भावतु जे जो भुवनेश्वर रोचे कि ना भुवनेश्वर बाहर आसिक भुवनेश्वर भी पढ़ुं आपण मान केते बढ़िया गोटे फैसिलिटी अच्छी जस्ट 999 रे आपन को फाउंडेशन बैच मिलू ठीक अच्छे तेणु चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हम स्टार्ट करिया पिला माने क्वेश्चन नंबर डे हला व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन for a candidate to seek election to the Lok Sabha 18 years 21 25 or 30 यार आंसर निश्चित भाव कमेंट सेक्शन दियंतु हमें जानि चाहूँ को कैंडिडेट माने वीडियो देखि इंटरेस्टेड अछंदी जानिया पई एमी क्वेश्चन गुला जो पढुची हम आंसर कर परिबी आंसर कले आपन कोन मिलिबो ना आपन निश्चित भाव गोटे स्माइली सिंबल मिलिबो जदि आपन आंसर करथिबा हार्ट एसएमएस मिलिबो ता सहित आम प्लानिंग करछु आपण मानकु जो माने कमेंट सेक्शन में आंसर देबे आ वीडियो टिक लाइक शेयर बेसी सब्सक्राइब करिवे त निश्चित भाव में करंट अफेयर मैगजीन गोटे हमर अछि आको फ्री पोस्ट आपण मानकु डिस्ट्रीब्यूट करबो आपण हमें कमेंट सेक्शन देखिबो जे आपण माने एडा को आंसर देचंती आ आपण माने निश्चित भाव में आपण हमें आपण कांटेक्ट करिके निश्चित भाव आपण को व्हाट्सएप रे आपण को पीडीएफ फाइल दबो ओके ଆଉ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓକେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍